Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. In today's video, we are taking a sneak peek into Virat Kohli's, the cricketer's personality. किस तरह की personality है उनकी. मुझे याद है कि मैंने एक बार उनका वीडियो, एक्चुअली उनका फोटो देखा था विद दिस योगानंद की बुक को वो हाथ में लेके बोल रहे थे कि दिस इज हिज इंस्पिरेशन एंड दैट थिंग एक्चुअली one point in my life inspired me to read the whole book by Yoganand ji, and I think it is everybody should read that book because that book is not only inspirational but it is also very magical. He makes you believe in the magic and how everything is energy and how everything is possible. This book makes you believe in the possibilities which science cannot prove or doesn't टॉक्स अबाउट. तो योगानंद की वो जो बुक है वो सबको पढ़नी चाहिए. एंड जब मैंने विराट कोहली को देखा एंड ही इज सच अ सक्सेसफुल क्रिकेटर, और तो डेफिनेटली व्हेन दीज स्टार एंड व्हेन दीज आइकॉन्स talk about these real things, then it goes a long way in giving a message to the people that yes, if this person reads it, it makes a sense. So that brings the importance of these icons doing the right things instead of promoting the Pepsi. इन्होंने कभी भी पेप्सी जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया है, or maybe in his initial days he would have done it, but not now. Definitely for a long time he is not doing that. So this is something like you preach what you do. You don't go out selling things which you yourself don't consume, unlike the Bollywood guys. So definitely a very inspiring personality, and it calls for all of us to take a sneak peek into this personality. He also went through his down phase and then he has bounced back, and there is a spiritual side for everybody to see. So let's see. I think he's back to his spiritual connect, and that gives him that kind of probably gave him all that energy and to bounce back. चलिए ठीक है, with all that introduction, चलिए हम देखते हैं विराट कोहली की पर्सनालिटी कैसी है. किंग ऑफ वॉन्स, बिल्कुल हमने यही बात की कि कैसे उन्होंने he went through his low phase, he had to give away his captaincy, and काफ़ी बातें भी हो रही थी. And now he said that if you have seen his interviews, how he has talked about how he even felt very weak mentally, and then finally he went through the rigor of changing himself, taking on the challenge and changing himself and becoming king of cups. Now this is very important because Virat has always identified and many times he has talked about how anger always gets the better of him, है ना. And even Sadhguru has talked about him, that how he has something, he is something different. And if he can only control on his anger, he can channel all that energy into something absolutely exquisite. तो यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स का आना हमें बता रहा है कि इन्होंने अपने एग्रेशन को, वो एनर्जी को किस तरह से ब्यूटिफुली चैनल किया है इस कामनेस में. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. सो लेट्स सी. एंड यस, what is it getting him? He has won. This ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लाया है अपने एग्रेशन को, या एक डाउन फेज में जो गए तो वो सारी एनर्जी को चैनल करके, तो ये हमें ये बताता है ना, दीज स्नीक पीक्स आर जस्ट नॉट टू गेट इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ एंड पीप इन टू देयर लाइफ, बट टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव डन इट एंड आर देयर. तो जब इन्होंने अपना एग्रेशन और लो फेज की एनर्जी को चैनल किया, तो दिस इज व्हाट ही हैज टर्न्ड इनटू, एंड दिस इज व्हाट ही इज गेटिंग. ही इज फीलिंग सक्सेसफुल, ही इज फीलिंग दैट ही हैज वन ओवर हिज डीमंस. और लो फेज हम सबकी लाइफ में आता है, गुस्सा हम सबको आता है, बट हाउ टू गेट द बेटर ऑफ योर गुस्सा एंड द लो फेज इज टू चैनल दोज एनर्जी इनटू समथिंग ब्यूटिफुल. बिकॉज गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन फील करना, ये सारी चीज़ें भी एनर्जी ही होती हैं, एंड दिस एनर्जी कैन बी चैनल्ड इनटू अ बेटर वे फॉर अ बेटर वर्जन ऑफ यू. तो येस, लेट्स सी.
God's God Essentials, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides, Madhur ke Makali, Umnisha, Jabajambali, my dear friend, your Spirit of Love, my regarding angels. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all of us to help us understand the personality of the cricketer Virat Kohli. All right, a very sunny personality, and yes, all these three cards make so much of sense, and the way they have turned out. Yes, he felt that he has been pushed to the corners. He was, this is really important. देखिए जब लाइफ में सब चीज़ अच्छा चलता जाता है, then you are a lucky go person. There's people will also say that yes, you are a lucky go person, you are blessed, you are gifted. नो बिग डील. लेकिन जब लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती है और जब उस डिफ़िकल्टीज़ को आप पार करते हैं तो मज़ा ही कुछ और होता है. लोग आपको बिल्कुल डिफरेंट लाइट में देखते हैं. यहाँ पे देखिए, आफ्टर बीइंग सो सक्सेसफुल, आफ्टर बीइंग एक्नॉलेज्ड, like a very talented cricketer, he went through a difficult phase jahan pe he was feeling pushed to the corners. He went through his really down stage, जो बोलते हैं ना, लोज बोलते हैं जो लाइफ का, तो वहाँ पे, एंड दिस कार्ड इज ऑल अबाउट बीइंग पुश्ड टू द फेंसेस, स्टैंडिंग ऑन द फेंस एंड नॉट गिविंग अप स्टिल. एंड यहाँ से उन्होंने क्या किया कि नो, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई सिचुएशन एंड आई विल टर्न दिस अपसाइड डाउन. इट्स नॉट गोइंग टू गो एनी फर्दर. दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू एस्केलेट टू 10 ऑफ wands की एनर्जी. ये भी एक तरह का वार्निंग है कि यू आर द वुंडेड वॉरियर, टेक बैक योर पावर, टेक बैक योर स्ट्रेंथ. एंड यहाँ पे ये जो कार्ड आया जो कि ये अपोजिट में है, दिस इज विराट टेकिंग कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ, हिज सिचुएशन, हिज लाइफ गोइंग डाउन साउथ. Things spiraling down in his career. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि नो, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ. येस, आई एम नॉट गोइंग टू हिट द रॉक बॉटम. आई एम, यहाँ से ही मैं टर्न लेता हूँ. यहाँ पे भी अगर देखो तो दिस इज लाइक हिज, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत एक पुश टू द कॉर्नर, और यहाँ पे so much of mental stress he is going to, जो कि उनकी वीडियो है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि I felt weak mentally. This is exactly the situation. And yet यहाँ पे जो वो mentally weak feel कर रहे हैं, तो this card specifically, this 10 of swords is not about hanging your boots. It is about, taking a U-turn and not giving up to the darkness around. And this card is not seeing the darkness. It is about seeing the brighter side of life. तो हम जानते हैं कि he is a very positive, he is a go-getter person. He, rocks and rolls, and he has this aggression. And this applies to all of us. We can channel this energy in a positive way. तो विराट कोहली भी डिफिकल्ट टाइम से जाते हैं. He also feels and goes through the same life situations of very ups and downs, है ना. And here is the same challenge for him also. उनको भी वही सारी एनर्जी को चैनल करना है प्रॉपर ढंग से. And when you channel it, this is the sunny light, sunny personality that you are seeing right now. जो अभी की उनकी पर्सनालिटी है, gaining control back on, it's more like कि देखिए, जीतना आपको लोगों को नहीं जीतना रहता है, हमेशा जीतना आपको अपने आप को ही रहता है, अपने अंदर के डीमंस को जीतना रहता है. और जब आप वो जीतते हैं, जहाँ पे हमने अभी एक कार्ड देखा था ना, किंग ऑफ कप्स बन गया है वो, अब वो किंग ऑफ कप्स बन गए हैं, देन ही फील्स, जब he feels the success, even if he is not the captain and all this thing. Yes, it makes a lot of difference. It gives you that recognition to your talent, but he not being a captain doesn't takes anything away from the cricketer that he is. He still continues to be that cricket, a maverick cricketer that he has always been. So whether captaincy or not captaincy doesn't make any difference. He's still the winner because he has won the demons within. He has not given up, and that inner victory shines like a sunlight onto you and to everybody around you, and everybody feels the sunlight. Sunlight के बारे में क्या है कि everybody feels it. You cannot not feel the warmth of the sunlight and stand in the sun. You have to feel it. People will recognize it, and it is all coming from within. You winning your own inner demons. तो ये सारी चीज़ें, this is about winning your inner demons and shining your sunlight on everybody. और आज जब आप विराट की कोहली का आपने रिक्वेस्ट भी किया था, तो this is what it is. We want to know about him because we see a different विराट, जो कि हमने कुछ
कुछ महीनों पहले या फिर कुछ साल पहले से वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी. चलिए, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, द स्टार कार्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड, द डेविल, always running on the go, chasing, attitude. Two of cups is the environment, and six of cups in opposite, and queen of pentacles. We will see what do we have at the back of the deck. An ace of wand in reverse, and we have the temperance card, and we have the ace, one of cup, ace of cup भी है. इसके बीच में क्या है? All right, let's see विराट की पर्सनालिटी क्या हो रही आ रही है. एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हमें डेफिनेटली बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी ग्राउंडिंग का कमी है. personality. What we need to know about Virat's personality. We have the star card in the past and we have the devil card in the future. Now, what does this really mean for all of us? This really means star card is all about, having a long time dream, big dream, a dream that you cherish. Okay? He always had a very, he past में देखिए ये पूरा पर्पल का कार्ड है and this is his spiritual aspect to it. Okay, this person is also looking up into the stars and this looks like some galaxy kind of a thing. For the first time ever in this card I have seen that. You actually see there is some rings like जैसे कि solar system में होते हैं ना, यहाँ पे ये ring देखिए, ये ring देखिए ऐसे करके, and more like a star and sun. So this gives me that he has a spiritual connect. Okay, he has a spiritual connect. His spiritual and he really believes in the divine, the spiritual connect, the divine, connected through some cord to the divine. The star card is also about dreams, so there is some dream that he really wants to achieve. He always had something to achieve. जैसे कि एक ड्रीम है उनका और वो बचपन से ही इट्स अबाउट द पास्ट थिंग. ओके, तो पास्ट में एक स्पिरिचुअल कनेक्ट तो है ही जो कि उनको इंस्पायर करती है, प्लस wanting something and always working for that because he really believed that कि वो ड्रीम उनका सच होगा, because he believed in himself, he also believed in the divine कि divine will help him to achieve his dream. तो यहाँ पे एक spiritual connect आ रहा है, एक believe in his dream आ रहा है, and एक spiritual energy के साथ अपने पैशन पे काम करने वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ये पता चल रहा है. तो
ये पास्ट में आया है, तो आप बोल सकते हैं कि बचपन से ही एक स्पिरिचुअल कनेक्ट था, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन था, ईश्वर पे विश्वास था और अपने टैलेंट पे विश्वास था, एंड वहाँ से कनेक्ट करके ना ही यूज्ड टू वर्क। तो ऐसा नहीं है कि बस ये, तो आप देख रहे हो कि I believe that when you are spiritually inspired and you work, you don't really have to be into a spiritual career, but if you have a divine connect of some sort, one-on-one connection with the divine, जहाँ पे आप प्रेयर करते हैं, आप बात करते हैं डिवाइन से, तो the divine energy works through you. It helps you, protects you, leads you, directionless नहीं करते हैं. Nobody is able to, it's always protecting you, leading you in the right direction. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है कि वहाँ के spiritual connect से he's like, always guide me and he's being guided and like that. ये चीज़ मुझे यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है. उसके बाद क्या हुआ? एक तो गो गेटर यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि दैट ही इज़ अ गो गेटर. ही इज़ वेरी गुड विथ हिज कम्युनिकेशन ऑल्सो. ही चेजेस हिज ड्रीम्स, वेरी एथलेटिक. यहाँ पे बाइक है बट स्टिल ही इज़ नॉट राइडिंग द बाइक, ही इज़ काइंड ऑफ रनिंग टूवर्ड्स इट. तो अपने गोल को चेज करना, कुछ भी चीज़ अचीव करना, ये उसके एटीट्यूड में है. और ये एटीट्यूड यहाँ से ही, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन है अपने ड्रीम के लिए, तो ही रन्स फॉर इट. तो उस तरह का एटीट्यूड है. ही इज़ अ गो गेटर, बट वॉट इज़ रियली बर्निंग द फ्यूल फॉर हिज गो गेटिंग नेचर, स्पिरिचुअल फ्यूल है उसका, डिवाइन कनेक्ट है. तो वहाँ से एक वो एनर्जी आके is fueling him to run, not take the help of the bike, but to run for it. Where is this energy coming from? Spiritual energy is coming. So he really depends on the spiritual connect to keep him going, to tap into his power, to take his power back, that kind of a thing. Okay, this is what I'm getting from these two cards. यहाँ पे भी देखिए सबकॉन्शियस लेवल में इट्स अ हाई प्रीस्टेस, एंड हाई स्पीड प्रीस्टेस इज समबडी हु इज़ वेरी इंट्यूटिव. तो वही एक डिवाइन कनेक्शन का जो हम बात कर रहे हैं वही चीज़ को बता रहा है यहाँ पे कि इज़ वेरी इंट्यूटिव. ही लिसन्स टू हिज गट फीलिंग्स, ही इज़ वेरी इंट्यूटिव. एंड ऑब्वियसली जो योगानंद जी का ये सारा जो बुक वो पढ़ते हैं, तो फिर यू अंडरस्टैंड कि येस ही हैज़ दिस इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी एंड थोड़ा सा रिलीजियस एंड ऑल दैट. तो ये चीज़ें हैं, ये सबकॉन्शियस में ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल. मे बी सामने में ही कैन गेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी एंड डू समथिंग एल्स, गेट कैरिड अवे. मे बी हिज वॉन्ड एनर्जी जो कि जो एग्रेसिव एनर्जी है, दैट कैन मिसलीड हिम टू डूइंग समथिंग, बट subconsciously at the core of it he is spiritual. He has this divine connect. He listens to his instinct, gut feeling and follows that thing. वो चीज़ें हैं. Core center में we have Ace of Pentacles which is reverse, and you have the Two of Wands. What is this telling us about the personality? Two of Wands is यहाँ पे definitely bringing his ambitious side to the us world, to achieve something. He wanted to be somewhere. This is the ambitious energy, wanting to be somewhere, wanting to, be somebody in the world. Ace of Pentacles right in the center of the reading. Ace of Pentacles is about, what does this mean? यहाँ पे he is tending something. But
इसके रूट्स ऊपर ग्रो कर रहे हैं. The roots are growing upward, and this looks like a mandala. This is looking like a mandala. What does this mean? Ace of Pentacles is about starting something related with money, but not really. Not really, not really. यहाँ पे he is kind of, what I get is that at a conscious level, he keeps to himself. He is, while he may appear like, very like a sunlight, his personality is like a sunshine, and you get attracted towards his personality. But conscious level पे या फिर to the world, he is more like he likes to keep to himself. He is not very much of a extrovert person. Like how Virendra Sehwag is. Virendra Sehwag is very outspoken. He speaks his mind out. Like Saurav Ganguly, he speaks his mind out. But this person, in spite of आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है, तो यू माइट फील दैट ही हैज़ अ वेरी फ्लैम, क्योंकि ये लियो की एनर्जी भी है, तो आप फील कर सकते हैं कि ही इज़ अ पर्सन जिससे आप जाके बात करो तो वो बहुत टॉकेटिव होगा, बिकॉज दिस इज़ अ लियो एनर्जी. नो, हिज पर्सनैलिटी शाइन्स लाइक अ सन. ओके, यू कैन फील द वार्मथ एंड द लाइट. हिज पर्सनैलिटी काइंड ऑफ शाइन्स, बट ही इज़ नॉट एन एक्सट्रोवर्ट. ओके, आई मीन he shares his thing, he can share things only, जैसे कि introvert कैसे होता है, they are comfortable with their own circle. तो same thing goes with this guy. Conscious level पे to the world he is not like a very talkative person. वो बहुत नपा तुला बात करेगा, but most of the time outside world या फिर people who don't know him will see him more as somebody who keeps to himself. He is more like elusive बोल सकते हैं, या फिर recluse, keeping to himself. वो चीज़ें हैं. Introvert, but that doesn't necessarily mean that introverts, it's not, ऐसा कुछ नहीं है कि introvert एक धारणा बनी रहती है कि introvert are very confident नहीं होते हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है. Here his personality is really shining out, but he likes to keep to himself. All right, okay. देखिए, एक चीज़ इंटरेस्टिंग इंसाइट जो आ रहा है विराट की पर्सनालिटी का is related with money. Okay, something related with money. Like he wanted to have this, nurture this money. Money का aspect at the core of his personality है, ठीक है? Like financial stability and security is something that he considers very 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 important, क्योंकि ये जाके इनके कोड में बैठ गया है. And he is even wondering, जैसे कि thinking कि how you can become stable in your career, stable, जैसे कि कैसे आप अपने लाइफ में stability and security ला सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट फीलिंग. अगर आप माधुरी दीक्षित के रीडिंग से इसको कंपेयर करिएगा तो माधुरी दीक्षित वॉज ऑलवेज फोकस्ड अबाउट हर करियर एंड अ पैशन एंड ऑल दैट. यहाँ पे भी विराट के रीडिंग में भी पैशन है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट ढंग से आ रहा है. यहाँ पे ही इज वरिड, ही इज divinely connected, he has the spiritual side, yahan pe he has the gut instincts, he has those intuitive hits.
he feels that he has this connection with the God. उनके एस्पेक्ट्स में हमने देखा कि वो बुक्स पढ़ते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन यहाँ पे भी आपको लगेगा कि जिस तरह से जिस तरह का क्रिकेटर है वो, ही इज़ लाइक हिज टू, आपको लगेगा ही, जैसे कि माधुरी दीक्षित के रीडिंग में हमने क्या बोला था, वी गॉट द एनर्जी दैट शी ड्रिंक्स, शी ईट्स, स्लीप्स, ड्रिंक्स हर ड्रीम, दैट वाज द एनर्जी, दैट वाज हर पर्सनैलिटी, मैंने कि बस ये चाहिए तो ये चाहिए, शी वॉज कंज्यूम्ड बाय इट। और विराट कोहली जिस तरह का क्रिकेटर है, ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज ड्रीम, he is such a passionate cricketer, he is such an aggressive cricketer, he has broken many records, people look up to him, तो आपको लगेगा कि he is consumed by his cricket. But इनकी personality में it's not like it's only about his dream of becoming a cricketer. He is not tunnel visioned on his one dream. He has other shades to his personality as well. That is what I'm trying to explain you. जबकि माधुरी दीक्षित के रीडिंग में, personality reading में, it was only one way forward. It was about my dreams and how to achieve it. That's it. She was tunnel focused on one aspect of her personality या फिर life. और उनकी रीडिंग में जो आया था, हमें आर्टिस्ट आया भी था ना, तो मे बी दैट वॉज सम पार्ट ऑफ अ सोल पर्पस। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन कनेक्ट आ रहा है, एक इंट्यूटिव हिट्स आ रहा है, एक वेरी इंट्यूटिव पर्सन आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही सनशाइन वाली पर्सनालिटी आ रही है, जो कि अपने डाउनफॉल्स को, और व्हेन थिंग्स वर आउट, व्हेन ही वाज इन द लो फेज, ही टुक कंट्रोल ऑफ इट एंड ही टर्न्ड इट इनटू समथिंग something so bright and sunny, and people see his personality and are attracted by his warmth and his smile and how he talks and everything. And yet he is not a person who shares much with the world. जैसे कि रणवीर सिंह किस तरह का पर्सन है, तो इस तरह का पर्सन नहीं है विराट कोहली। ही इज़ वेरी बहुत नपातुला बात करने वाले, टू द पॉइंट बात करने वाले। बाहर के लोग से मैं बात कर रही हूँ, बाहर के लोग विल ऑलवेज सी हिम एज अ वेरी इंट्रोवर्ट, कीपिंग टू हिमसेल्फ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि ये कॉन्शियस लेवल पे है हमारा। अब सेंटर में आके देखिए, यहाँ पे मनी की चीज़ें शायद, he probably in his growing age, he felt little unstable because of the financial condition. He didn't felt very safe and secure, and that's why he always had this thing in his mind कि he needs to strengthen this part of his personality or his life, कि एक solid foundation create करना है, stability create करनी है, ये करना है। एंड ही इज यहाँ पे ये इसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ही वॉज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट क्रिएटिंग अ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली, बिकॉज हियर इट इज सिटिंग, एंड ऑलवेज वॉज वेरी मेथोडिकल टूवर्ड्स इट, वेरी मेथोडिकल कि कैसे करें, क्योंकि टू ऑफ वॉन्स इज ऑल्सो अबाउट वर्किंग ऑन योर वट एवर यू वॉन्ट टू वर्क। यहाँ पे ये अपने इस एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू चॉक आउट द प्लान्स, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड ऑल दैट थिंग। यहाँ पे प्लानिंग भी हो रही है, यानी कि ही इज ऑल्सो समबडी हु इज नॉट ओनली रनिंग अराउंड फॉर नथिंग, ही इज ऑल्सो समबडी हु बिलीव्स इन प्लानिंग थिंग्स आउट एंड टेकिंग एक्शन ऑन इट, बिकॉज टू ऑफ वॉन्स इज ऑल अबाउट प्लानिंग, बीइंग अ ग्रेट प्लानर, दैट प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि उसने अपनी नीड आइडेंटिफाई की है कि येस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, आई वॉन्ट इट टू बी रोबस्ट फॉर मी, फॉर माई फैमिली, एंड येस आई विल प्लान इट आउट। तो उसने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की, फ्लो चार्ट बनाया। सो ही इज़ वेरी मेथोडिकल, ओके, एट हिज कोर पर्सनैलिटी, एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि मेथोडिकल हैं, एक एक्शन लेने वाले बंदे हैं, ही टेक्स एक्शन ऑन थिंग्स, ही प्लान्स इट आउट एंड टेक्स एक्शन ऑन इट, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एक्चुअली प्लान करने के बाद ही रियली गेट्स ऑब्सेसिव अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्वाइट लिटरली। यहाँ पे देखिए, तो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट हिज पर्सनैलिटी। ही इज़ अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज द नीड। जैसे कि वो अपने, मानिए अभी एग्जाम्पल में लो फेज में, फॉर मे बी 1-2 साल पहले से लो फेज में उनका करियर चला गया था पर्सनली, और आफ्टर गेटिंग मैरिड प्रॉबली। तो वहाँ पे इट्स नॉट लाइक दिस इज अ पर्सन जो कि वैलो करता जाएगा कि ओके ठीक है, अब तो लाइफ चेंज हो गया है, अब इसी में बहते चलते हैं, थोड़ा सा भगवान को गाली दिया, लोगों को गाली दिया, तो इस तरह का बंदा नहीं है। इट्स नॉट लाइक ही विल कीप ऑन फ्लोइंग विद द विंड।
आई थिंक somebody was really flowing with the wind. किसी की पर्सनालिटी में इस तरह का गाइडेंस भी आया था कि he really flows with it. I don't remember whose reading was that, but here this is a person who is not going to flow with the wind. You know, he will flow only as long as, but after a point he will take control of the situation. जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि yes, he was pushed to the corners, things were not happening in his life, सब चीज़ change हो गया था from being such a, you know, a cricketer looked up to being like what, leaving the captaincy and all that. So he didn't allow himself to wallow on this. He said, I will take control of the situation. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रही थी आपको कि ये वो बंदा है कि अगर चीज़ें बिगड़ती हैं या फिर मैंने कि हर समय पे अपने लाइफ को, अपने लाइफ सिचुएशन को, अपने हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप को ना वो स्टॉक लेते रहते हैं. ही कीप्स अ टैब ऑन इट कि ये कैसा इसका हेल्थ ठीक है कि नहीं है, रिलेशनशिप का हेल्थ गड़बड़ हो रहा है, तो ही विल टेक अ स्टॉक ऑफ इट एंड ही विल स्टॉप व्हाट इज डिटोरिएटिंग इट एंड ही विल टेक करेक्टिव एक्शंस. तो इस तरह का बंदा है ये. ऑल राइट, क्योंकि ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज. क्योंकि वो यू नो व्हाट ही गेट्स दिस इंट्यूटिव हिट्स, तो ही लिसन्स टू हिज गट फीलिंग कि नहीं भाई ये सही नहीं चल रहा है रिलेशनशिप में, आई एम गेटिंग टू कैरिड अवे बाय समबडीज परसेप्शन एंड आई एम लूजिंग माई सेल्फ. आई विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड ही विल गो बैक टू हिज स्पिरिचुअल साइड टू गेट गाइडेंस and he will trust his intuitive hits and guides. तो on a surface level हम कभी हम सब में ये प्रवृत्ति होती है कि हम मिसलीड हो जाते हैं, थोड़े से लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. ये भी शायद अपने वाइफ के इन्फ्लुएंस में आ गए होंगे, लेकिन जैसे इनकी पर्सनालिटी है कि ही विल टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन. यार ये सही नहीं हो रहा है, जैसे कि हेल्थ के बारे में भी मैं अपना फिटनेस मेरा सही नहीं है, दिस इज नॉट हाउ आई शुड प्ले, आई शुड बी रनिंग मोर इन द फील्ड, आई कैन नॉट गेट टायर्ड लाइक दिस. सो यू सी हाउ ही कीप्स टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन. नहीं ये सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे करेक्टिव एक्शन. नहीं मेरा डाउन फेज बहुत आ गया है, लो फेज में आई एम जस्ट अलाउिंग माई सेल्फ टू बी अ विक्टिम, नो आई नीड टू चेंज दिस. ही विल स्टार्ट टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन फ्रॉम देयर. सो दिस इज हिज पर्सनैलिटी टू आइडेंटिफाई अ नीड. ठीक है, और से ओके कॉल इट आउट एंड से आई विल टर्न दिस फ्रॉम नाउ. चाहे वो ईटिंग हैबिट्स हो, चाहे वो फिटनेस हो उनका, चाहे वो करियर में लो हो, चाहे रिलेशनशिप में वैलो हो रहे हैं. Every time this guy is, you know, taking a tab of it. ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं सही हो रहा है, तो क्या करना जरूरी है? Stop all this, start these things, get going with it. So this is the planning part of it. Planning it, और जब plan कर लेते हैं तो he gets obsessively behind that, you know. He's not following it. He's not just following it like a knight of wands. He gets ब्लडी बिहाइंड इट, आप बोल सकते हैं. जैसे डेविल किसी के पीछे कैसे पड़ जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने नीड आइडेंटिफाई की कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, इसका हेल्थ मेरे लाइफ में, मेरी फैमिली के लाइफ में सही होना चाहिए. तो इन्होंने बोला प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग किया, टक 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 दिस टू डू लिस्ट करना है. और जब टू डू लिस्ट स्टार्ट हो जाता है, आपका प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है, देन यू डोंट बच, यू गेट ऑन टू द टास्क. 1 2 3 4 5 5 चीजें करनी है तो करनी है. इस वीक ये 2 काम करना है तो करना है. ये चीज नहीं खाना है तो नहीं खाना है. ही ट्रस्ट हिज इंट्यूटिव हिट्स एंड देन ही रन्स बिहाइंड इट. ओके, तो ऑब्सेशन यहाँ पे आ रहा है, प्लानिंग यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे नीड आइडेंटिफिकेशन भी है, तो यानी कि यहाँ पे एक एनालिसिस मोड भी है कि क्या सही है नहीं सही है, उस पर प्लानिंग भी है, प्रॉपर प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर वाला प्लानिंग आप बोल सकते हैं. एंड देन इट्स लाइक गोइंग बिहाइंड इट, गोइंग गन्स ब्लेजिंग, और यहाँ पे ही इज एग्जीक्यूटिंग इट ऑल्सो. ओके, ऑल राइट, तो ये चीजें हैं. मुझे लगता है कि ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स जो है, जो कि पास्ट चाइल्डहुड का कार्ड आता है, वो कि थोड़ा शैडो साइड में है अपने. तो इनका कुछ बचपन में कुछ हुआ होगा, जैसे कि तो उनकी पर्सनालिटी पे कुछ असर डाला है. इनके बचपन का चीज़ हो सकता है कि फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से लेके, या फिर अपने पापा से लेके कुछ, जैसे कि उतना समय स्पेंडिंग कर पाए, या फिर there's something related with father is what I'm getting here. And yeah, that is what it is. Maybe couldn't spend some time with him, or couldn't do that much for his father, that kind of a thing. तो एक father से related कुछ चीज़ें हैं.
However, as we talk, that this is a guy who takes stock of the situation, he gets his intuitive hits, he feels protected, he feels a divine connect, follows it, really believes in it, makes the plan, chases it like a, gets behind it and then runs for it. So not just, his action काम भी कर रहा है. और यहाँ पे जब हमने देखा कि तो हमने बोला कि यहाँ पे उन्होंने नीड आइडेंटिफाई की थी ना, तो अपने लाइफ में हमेशा नीड आइडेंटिफाई करते रहते कि मुझे अब ये करना है, फिटनेस के लिए, खाने के लिए, या फिर रिलेशनशिप में गोल, सो ही इज अ पर्सन विथ हु हैज दीज गोल्स फॉर हिमसेल्फ, करियर गोल्स, रिलेशनशिप गोल, vacation goal maybe, weekly goal maybe, monthly goals maybe, yearly goal, life goals, that kind of a thing. और क्या करते हैं कि ये, क्योंकि ये सारी चीज़ों को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, वेरी मेथोडिकल हैं, तो ही अचीव भी करते हैं अपनी चीज़ों को, तो ही डिसाइड्स एंड ही अचीव्स इट. सो दैट इज द काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी ही हैज़. सो आपने करियर में भी देखा होगा, ही डिसाइडेड टू बी अ क्रिकेटर, देन ही चेज्ड इट. एंड what makes Virat Kohli so different than so many cricketers? Because first of all, तो he chases his dream like a devil, like obsession की तरह chase करते हैं. पर इतने obsessively chase करके successful क्यों हो जाते हैं? दो चीज़ें हैं. एक तो वो बहुत नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ज़रूरत है मुझे, एंड दिस इज़ द ज़रूरत, आई विल नॉट ओवरलुक दिस, एंड उसका प्रॉपर प्लानिंग करते हैं. जब प्लानिंग होती है तो आपको एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. तो ही गोज बाय प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड विद अ डेविल का फोर्स, ऑब्सेशन, एंड दैट्स वाई ही गेट्स सक्सेसफुल इन मोस्ट ऑफ हिज थिंग्स, बी इट हिज करियर फॉर हैविंग अ क्रिकेटर, बी इट बाउंसिंग बैक फ्रॉम द लो फेज, बी इट टेकिंग कंट्रोल ऑफ हिज रिलेशनशिप विद यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ही प्रॉबली गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेशनशिप अराउंड हिम, बट देन जैसे कि इनका पर्सनैलिटी है दैट ही कीप्स अ स्टॉक ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि एक बार किसी के बारे में एक विचार बना लिया तो बस वैसे ही चलता जाएगा. ही विल कॉन्स्टेंटली असेस द सिचुएशन, द रिलेशनशिप, हिज फिटनेस, हिज ईटिंग हैबिट्स. तो कॉन्स्टेंटली असेस करने वाला बंदा है ये, और उस पर प्लानिंग करके एक्शन लेके ऑब्सेसिवली उसको चेज करता है या फिर फॉलो अप भी करता है. एंड दैट इज वाई ही कुड बिकम दिस सो सक्सेसफुल, क्योंकि इसका एक एक स्टेप जो इनका है ना बहुत ही ये है. ऑल राइट, दैट्स अ ब्यूटिफुल गाइडेंस कमिंग अप. Ace of Wands. यहाँ पे भी देखिए एंजेलिक ब्लेसिंग आ रहा है ना. Angelic blessing is very, very evident in his personality, which is the religious, which is the spiritual connect to his personality. Okay, and spiritual connect definitely gives us that energy to keep moving forward, even in the difficult of the phase. Ace of Wand. Ace of Wand. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दिस इज सम थर्ड आई थिंग. ओके, यहाँ पे भी कुछ थर्ड आई है, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे भी एंजल्स है, यहाँ पे भी गैलेक्सीज एंड ऑल दोज थिंग्स है. तो आई थिंक ही इज दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. द आईज आर क्लोज्ड. That is what it is. यहाँ पे तीनों कप हैं at the back of the deck. There are 3 cups at the back of the deck and they are all blocked. Now what does this mean? What does this mean? This definitely means something, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल कोर ऑफ द पर्सनैलिटी में जाके जो कि बता रहा है कि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वॉज द इशू in his life, which was sitting in his heart. Okay, and this particular issue made him think about his
देखो 5 of Cups is definitely there is disappointment related with this. Ace of Cup is again blocked where you are an Ace of Wand be Ace of Wands, Ace of Cup and Ace of Pentacles. So we have all the aces here, do you see? So we have all the aces here. Aces is like aces are all about starting something. It's number one. It's very it's about taking the initiative to start something. Okay? Ace, there are 2 beginnings in tarot. One is the page to the king and the one is the aces. तो यहाँ पे देखिए दिस इज वॉट मेक्स हिम क्वाइट अ ऑल राउंडर इफ यू से. यहाँ पे ये जैसा मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट, यहाँ पे जो एस ऑफ पेंटिकल है, आई एम नॉट पिकिंग इट अबाउट हिज पैशन, आई एम पिकिंग इट अबाउट हिज स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. तो बचपन में कुछ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कुछ पैसे की दिक्कत हो सकती है कि हुई हो, ठीक है, पापा से लेके रिलेटेड हुआ होगा, जिसके कारण ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ वेरी स्टेबल फैमिली. हिज उनके पर्सनैलिटी में था कि एक स्टेबिलिटी तो फैमिली में लानी ही लानी है, समझ रहे हो आप. और एक दूसरी चीज जो थी, एक तो एंड आई वॉज रियली वंडरिंग दैट वाई, बिकॉज दिस इज द पर्सन हु इज सिनोनिमस टू क्रिकेट एंड पैशन एंड एग्रेशन, देन वाई एम आई नॉट गेटिंग दिस एस ऑफ पेंटिकल एनर्जी, दिस कोर रीडिंग उनके पैशन से रिलेटेड क्यों नहीं आ रहा है. Because when you do a Virat Kohli reading, you expect that he will be consumed by cricket, but it's not like that. यहाँ पे बहुत different personalities है. यहाँ पे he is an introvert keeping to himself. Here he has a spiritual connect. Here he has the intuitive hits. Here he is obsessively chasing something what he has decided on, not necessarily क्रिकेट ओनली. तो आप देखते हो कि कैसे वो अपने फिटनेस को भी वैसे ही चेज करते हैं. वो अपने प्रॉबेबली रिलेशनशिप को उन्होंने ऐसे चेज किया था, प्रॉबेबली अपने फिटनेस को, अपने ईटिंग हैबिट्स को, हर चीज़ को उस तरह से चेज करते हैं. तो हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को, तो ये बंदा वो चीज़ है कि वो जो चीज़ डिसाइड कर लेगा ना वो करेगा, बिकॉज ही इज़ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी. यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड पे सोच रहे हैं कुछ, एस ऑफ कप पे कुछ सोच रहे हैं, और यहाँ पे किसी चीज़ का दुख भी है. एस ऑफ कप जो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड पे पहले आते हैं. एस ऑफ वॉन्ड इज समथिंग लाइक जिसे बोलते हैं ना कि एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो योर स्पिरिचुअल एनर्जी. बाय द वे, दिस इज अ वॉन्ड कार्ड, दिस इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी कार्ड, दिस इज ऑल्सो यहाँ पे थर्ड आई भी है. एंड इट्स ऑल्सो अबाउट having a purpose and chasing the purpose, because Ace of Wands is about your purpose, finding purpose in your life, finding direction in your life, and also to have a goal for yourself. So for him to stay on track, it is very important that he is chasing something or the other in his life. ठीक है, अगर जैसे कि अनुष्का के समय में आप देखना कि थोड़े से वो ट्रैक से इधर उधर चले गए थे. He was getting influenced by her philosophies and all that. बट ही ऑलवेज नीड्स टू बी इन कनेक्ट विथ हर. देखिए ये जो यहाँ पे है ना, ये इनका हार्ट और ये स्पिरिचुअल कनेक्ट है, ये हमेशा रहना चाहिए. एंड ये कैसे रहेगा, जब आप इस पे उतना ही फोकस करेंगे, जितना आप रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो उतना ही आप अपने मेडिटेशन पे या फिर अपने स्पिरिचुअल वेलबींग पे. इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग सम टाइम टू बी विथ योर डिवाइन, योर स्पिरिचुअल स्पेस. तो ये सही डायरेक्शन में चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे. जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में भी बोला था कि ही विल कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन. लेकिन अगर ये एस ऑफ वॉन्ड मिस हुआ, इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई ना, तो ही कैन गो हेवायर इन दी 3D वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड है. यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग भी है. तो जब तक ये अपने मेडिटेशन को या फिर थोड़ा सा एक काम टाइम जो बोलते हैं ना, हम अपने गॉड के साथ स्पेंड करते हैं, अपने ईश्वर के साथ रहते हैं, वहाँ पे उनको डायरेक्शन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और फिर आप उस चीज़ को आगे बढ़ते हो. लेकिन अगर वो कंज्यूम हो जाते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, और यहाँ पे ये स्पिरिचुअल कनेक्ट जो आप देख रहे हैं ये टूटता है, देन ही कैन गेट मिसलेड, ही कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस थिंग. ये चीज़ें हैं. ऑल राइट, ओके. तो यहाँ पे ये चीज़ उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट ही स्टेज कनेक्टेड स्पिरिचुअली टू हिज सोर्स. और ये कार्ड ये भी बता रहा है, 2 चीज़ें बता रहा है ये कार्ड, और एक ये भी बता रहा है कि देयर वॉज अ नीड, देयर इज ऑलवेज अ नीड इन हिम टू चेज समथिंग पर्पसफुल इन लाइफ.
ठीक है. ही इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि बहुत पैसे कमा लिए या फिर कुछ अचीव कर लिया लाइफ में तो बस हैप्पी होके अब उसको इंजॉय करेंगे. ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर एंड इज़ वेरी रेस्टलेस फॉर अ पर्पस इन हिज लाइफ. अब ये पर्पस बस जैसे कि हमने बार बार ये एक रीडिंग आ रही है कि ही इज़ नॉट ओनली सिंगल माइंडेड फोकस्ड ओनली ऑन क्रिकेटर. ही मे बी out of the world cricketer, but he is not totally consumed by cricket. He is as much consumed by any, he is always like, better version of me. Always ये ऐसा बंदा है कि he probably always has some goal or the other on which he keeps working. फिटनेस का गोल, खाना ठीक से खाने का गोल, सही डिसिप्लिन का गोल, इस तरह की चीज़ें हैं. तो ही नीड्स अ पर्पस इन हिज लाइफ. दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग. ऑलवेज ऑन द गो. एस ऑफ वॉन्ड इज फॉलोड बाय 5 ऑफ कप्स. ओके. सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हार्ट है. दिस इज द हार्ट एंड यहाँ की इनकी हार्ट की एनर्जी जा रही है कहाँ, ग्राउंड में जा रही है. और ये हार्ट की एनर्जी बेसिकली यहाँ पे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है. स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है. देख रहे हो आप, दिस अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन दैट यू कैन सी हियर. दिस इज फ्रॉम वेयर हिज रीडिंग स्टार्ट्स, फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम अ स्पिरिचुअल रेल्म. एक डीप कनेक्शन है हार्ट में. और यहाँ से हार्ट में जो एनर्जी आ रही है ना, ये नीचे जाके कहाँ पे कनेक्ट कर रही है, ये अर्थ में जा रही है. एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी टॉक्ड बिफोर वी एक्चुअली पिक्ड अप इन द कार्ड्स. तो वो इंट्यूटिव हिट्स था. तो हमने क्या बात किया था कि इनका एक 3D में यानी कि फिजिकल अर्थ पे एक प्रॉपर डायरेक्शन सही से आगे बढ़ते रहें अपने अर्दी लाइफ में. इसके लिए इनका स्पिरिचुअल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है इनके हार्ट में ना, यहाँ से ही जाके वो उनको ग्राउंडिंग दे रही है. तो अगर जहाँ भी ये स्पिरिचुअल कनेक्ट मिस करेंगे, जैसे कि मेडिटेशन मिस कर दिया, या फिर अपने भगवान से बात नहीं की, ईश्वर से बात नहीं की, या फिर उस पर थोड़ा भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, जस्ट बिजी हो गए बस ऐसे करने में, तो थिंग्स कैन गेट, ही विल नॉट get his inspirations, his motivation, his protection, his insights, gut feeling. तो यहाँ पे 3D में he can get haywire, he can get restless, he can get very aggressive, he can be misled by others' philosophy and all those things. तो ये चीज़ें बता रहा है. So very spiritual connect is what this guy has, and he needs to keep doing his the exercises or gym, क्योंकि that is all that connects him to his spiritual. यहाँ पे देखो यहाँ पे this is, you cannot overlook this. He needs the spiritual protection, spiritual companionship behind him all the time to stay balanced, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है. अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्ट जहाँ पे कभी भी इनका मिस होगा ना, तो ये अनबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो सकते हैं. तो दिस इज हिज पर्सनैलिटी. Very strong connect with the divine. So for his life to be balanced and stay on track, not get influenced by their personality, their philosophies, he needs to have his own spiritual time. ये है. तो this is the personality. चलिए देखते हैं यहाँ से लेके guidance on Virat Kohli's personality, dear angels. Anything you want us to know? Thank you so much. क्या है ये? Surrender negative thinking. Okay. Surrender low self-esteem. All right. तो यहाँ पे देखिए ये 2 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे. I mean, विराट कोहली लो सेल्फ एस्टीम, विराट कोहली नेगेटिव थिंकिंग. तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से आ रहा है, ये बचपन से आ रहा है उनके. ओके. और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि ही इज ऑलवेज वर्किंग ऑन बीइंग, ही इज वर्किंग ऑन बीइंग द बेटर वर्जन ऑफ समथिंग. ही इज नॉट हैप्पी विथ हु ही इज. ही डजंट बिलीव्स कि
you cannot chase perfection. And what is the need of chasing perfection? Because he is always making himself better. तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा, and that's why probably he is always kind of working on himself. चलिए पर्सनालिटी रीड में ये वाला कार्ड आर्चटाइप उठा के देख लेते हैं कि क्या है. Guidance coming for Virat Kohli's personality. Martyr. Addiction to self-pity. Learning the transcendental nature of service to oneself or a cause. Oh, exactly. This is what it is. Martyr. यहाँ पे पढ़ेंगे हम. Learning the transcendent nature of service to oneself or a cause. Exactly. यही हमने रीडिंग में किया है ना कि he is always working towards a cause. या तो ये अपने आप को better version बनाने में काम करते रहते हैं, या he is working towards some cause. So this is what we exactly picked up. He is kind of a person who needs a purpose. He is a kind of a person who works on a goal. He needs to have a purpose and he needs to be working on it. Otherwise he's इतनी energy है ना, spiritual energy, वो scatter होके इनको mislead करती है. So this is a person who is always working on something or the other. This is what it is. चलिए देखते हैं. So yes, बिल्कुल अपने आप पे काम करते रहना, कोई cause पे काम करना is his personality. A very strong personality जिसको हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे explore किया है. And cause is not only his. Please understand, guys. Virat Kohli as a cricketer, you will always feel that cricket is all his, but it's not like that. He has various aspects on which he keeps working. Okay, so that is what it is. Cricket can be a very important part of it, but not like everything is cricket for him. Yes, maybe 80-90%, but there are other aspects to him as well. चलो देखते हैं. We have this card. Freeing yourself and others from outmoded beliefs, releasing negative thought patterns. बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या बात की, देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली मैच हो रहा है पूरे गाइडेंस से. यहाँ पे हमें क्या आया, नेगेटिव थिंकिंग है और लो सेल्फ एस्टीम है. ठीक है, अब ये किसी वजह से हो सकता है, लेकिन हमने रीडिंग में क्या पढ़ा है कि ही इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज टेकिंग स्टॉक ऑफ सिचुएशन. क्या हो रहा है लाइफ में, ये लाइफ का एस्पेक्ट बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है. एंड देन व्हाट वी सेड कि ही विल टेक अ स्टॉक ऑफ हिज सिचुएशन, ही विल प्लान द थिंग्स, ही विल गेट ऑब्सेसिवली बिहाइंड इट, he will run behind it and then he will finally achieve it. हमने यही बोला था. हमने ये नहीं बोला है कि इनमें कोई इम्परफेक्शंस ही नहीं है. अगर अभी आपने नेगेटिव थिंकिंग देखा होगा, लो सेल्फ एस्टीम देखा होगा, तो बोले क्या रीडिंग है. आई मीन विराट कोहली लो सेल्फ एस्टीम, आर यू किडिंग मी? विराट कोहली नेगेटिव थिंकिंग, आर यू किडिंग मी? बट येस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज. विराट कोहली इज we all are the same. Everybody has their own demons. Everybody, something or the other is hidden in the subconscious, in your life experiences. You never know. But this is what makes them the hero, winning over their demons, their vulnerability. That is what makes you a hero. तो यहाँ पे देखिए, लिबरेटर है ये. फ्रीइंग योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम द आउटमोडेड बिलीव्स, रिलीजिंग द नेगेटिव पैटर्न्स. तो बात ऐसी नहीं है कि विराट कोहली को नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती है. विराट कोहली में लो सेल्फ एस्टीम नहीं हो सकता है, और भी कोई खामियां हो सकती है. बट द पर्सनैलिटी इसकी क्या है कि ये इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि नहीं मैं तो बहुत ये हूँ, मुझ में ये नहीं हो सकता. Constantly taking stock of the situation, and he is a liberator, and therefore you see that how this liberator is
लिबरेटर कौन होता है? जो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है, बहुत मेथोडिकल वे में काम करता है, जो कि हम बार बार बोल रहे हैं. सो टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, यहाँ पे क्या स्टॉक ऑफ द सिचुएशन है? ओके, नेगेटिव थिंकिंग है, ओके, लो सेल्फ एस्टीम है, वी विल हैव टू एड्रेस दिस इशू. व्हाट वी विल डू द प्लानिंग. व्हाट वी विल डू, प्लान करो 1 2 3 4 5 स्टेप, उसको फॉलो करना है, रिगोरसली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, लेकिन ऑब्सेशन की तरह फॉलो करना है. व्हाई इज दिस गाय फॉलोइंग दिस लाइक एन ऑब्सेशन? क्योंकि ही इज अ लिबरेटर. लिबरेटर आर्च टाइप है, कोई और आर्च टाइप नहीं है. लिबरेटर कौन होता है? जो कि लिबरेट करके ही मानेगा, माने कि करना है तो करना है. ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड देन ही इज रनिंग इट एंड देन ही इज अचीविंग इट. ही इज द लिबरेटर. बिकॉज अगर आपने लिबरेट नहीं किया, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल इनकंसिस्टेंसी है, इरेगुलरिटीज है, चैलेंजेस है, इससे मुझे अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को लिबरेट करना है. बिकॉज ही इज द आर्च टाइप लिबरेटर. तो वो क्या करेगा? ही विल बोलेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा सिचुएशन. ओके, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, या फिर ओके फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, या फिर डिसिप्लिन ठीक नहीं है लाइफ में, या फिर रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही गोलमोल हो रहा है. ओके, लेट्स डू व्हाट वी नीड टू डू. ही विल चॉक आउट द प्लान, ही विल टेक एक्शन एंड देन ही विल नॉट एक्सेप्ट इट टिल ही अचीव्स इट. तो यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल अबंडेंस अचीव कर लिया. यहाँ पे ही हैड सेट आउट, ही हैड आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. हियर एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल ही इज अचीविंग इट ऑल एंड दैट इज व्हाट अ लिबरेटर डज. ही विल अचीव व्हाट ही सेट्स आउट टू लिबरेट. सो दैट मेक्स हिम अ गो गेटर. दिस इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग. मार्टियर इज somebody who sacrifices himself for a cause, है ना. तो मार्टियर का जो डेडिकेशन है ना, ये अपरंपार है. माने कि वो अपने आप, अपनी लाइफ को भी दे देता है किसी कॉज के लिए. एंड दिस इज एग्जैक्टली ब्रिंगिंग आउट द एनर्जी ऑफ अ डेविल यहाँ पे, जो कि ही इज behind that to the level of obsession, because devil ka card is all about obsessively getting behind that. Okay, but here he is getting behind something in a very positive way, क्योंकि he is a kind of, will he allow this devil to take control of him? No, because उनका nature क्या है? Keeps assessing the situation. तो yes, while this devil कैन टेक, थोड़ा सा वो स्वे हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा भी, थोड़ा सा ही गॉट कैरीड फॉरवर्ड इन हिज एग्रेशन व्हेन हिज व्हाटएवर, जब उन्होंने पूरा ही मेड सम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो थोड़ा सा वैलोइंग है यहाँ पे. हो सकता है कि वैलो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डेविल का एनर्जी भी है. सो डेविल कैन गेट you carried away into something, but he is not the person who can keep on, keep him carrying on. He will take stock of the situation, stop it, take a U-turn and start working on things like that. So that is the guidance, guys. Thank you so much for watching, and do let me know your thoughts on Virat Kohli. Definitely a very magnanimous personality, and therefore such a detailed reading on him. Okay, so he's not only all about cricket, he is about so many things. He is about working on himself, taking stock of the situation, and he is about the spiritual connect, intuitive hits, getting carried away because of his devil obsession. But yes, again coming back to taking stock of the situation and taking things back in his control. तो एक चीज जो बहुत लाउड विराट के रीडिंग में आ रही है वो ये है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है. he needs to have a spiritual connect to stay balanced in 3D. he has this spiritual, intuitive hits, this gut feeling which he follows. He's a very introvert person, keeps to himself. He takes stock of the situation and then plans it out, chases it obsessively, and then finally he is a liberator, will dedicate his life to his purpose, to his goal, whatever he decides. And एक और कार्ड क्या आया था? Martyr and liberator. Yeah, how true is that? He is a martyr and liberator. तो जब तक कि वो लिबरेटर इज समथिंग जो कि किसी चीज को लिबरेट करना चाहता है, एंड मार्टियर इज अ पर्सन जो कि जब तक कि उस चीज को अचीव नहीं कर लेता वो रुकेगा ही नहीं. तो दीज टू आर्च टाइप कमिंग टुगेदर मेक्स हिम द मैवरिक personality that he is. These two archetypes coming together gives him that so much of force to go and achieve things in the world, create the kind of records that he creates, be the personality that he is. Total transformation, because he will not stop till he achieves it, and he is very clear on what he wants to achieve. That's the liberator. So that's the guidance for today, guys.
Do let me know your thoughts, and I will see you again. Take care and bye for now.